Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, students, to another lecture of maths. So in the previous lecture we were here at exercise 8.3 and we have done these three questions. Now the fourth question that we are going to start today is I borrowed rupees 12,000 from Javed. That means मैं जावेद से कुछ पैसे borrow कर रही हूँ, so that will be my principal. अब रेट भी कुछ होगा, तो रेट इज 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. दैट मीन्स पहला कंडीशन ये है दैट आई एम बोरोइंग द मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल के सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा. नाउ हैड आई बोरोड दिस मनी एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट. अब बात यह है कि अब अगर मैं इसी अमाउंट को एट कंपाउंड इंटरेस्ट लेती हूँ, सो वट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे. जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट वेन एवर all the parameters are same and we are going to find the simple and the compound interest, the compound interest will always be more than the simple interest. Okay, अब वो कितना more होगा that we are going to do today. Just see here students, you can just write for simple interest का entirely करके then compound interest कर सकते हैं. मैं बीच में इसको ऐसे bifurcate इसलिए करती हूँ so that पेपर भी सेव हो रहा है और क्वेश्चन भी simultaneously हो जाएगा. Okay, so firstly for simple interest the principal is 12,000, the time is 2 years and the rate is 6%. So finding out the simple interest formula लगा के P into R into T upon 100, P is 12,000 into 2 into 6 upon 100, 2 zeros will cancel out, so it will be 240 into 6, that is rupees 1,440. Now the second thing I have to find is to find out the compound interest. So I'll just, principal is the same, the time is same and the rate is same. Then for compound interest we have to first find the amount. So it will be 1 plus R by 100 whole raised to the power n. So it's 12,000 into 1 plus 6 by 100 whole raised to the power 2. It will be 106 upon 100. Then it will be 53 into 2, 50 into 2. So it is 53 into 53 upon 50 into 50. You can just do it on yourself and just take how I have done it. So after that the answer is coming out to be 13,483.2. But this is not my compound, it is just the amount. So now for compound interest I have to subtract it from the amount, subtract this amount, subtract the principal from the amount, sorry, right? So my amount is this, principal is this, and the compound interest is 1483.2. see, this is more than that. Okay, so now the extra amount that has to be paid is, that will be compound interest minus simple. Obviously अगर एक इंसान इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, एक को इतने, तो उनका डिफरेंस कैसे निकलेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके. So the answer is 43.2. Now the fifth question is Wasim invested rupees 60,000 at an interest of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? Okay, so here it is, amount after 6 months. Okay, तो principal 60,000 है, time is 1/2 year, that means 12 months and the rate is 12%. but ये बोला गया है it is compounded half yearly, और मैंने पता है जब भी half yearly होगा हमें बस दो चीजें करनी है, टाइम को मल्टीप्लाई बाई 2 एंड रेट को डिवाइडेड बाई 2. सो अब मैं यही कर रही हूँ. टाइम हो जाएगा 1 हाफ ईयर सॉरी, एंड द रेट विल बी 6% पर हाफ ईयर. सो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के इट विल बी 60,000 into 1 plus 6 by 100 और टाइम इज 1. It will be 106 upon 100 and 100 दो zeros cancel होके it is 600 into 106 and the answer is 63,600. अब मैं इसमें compound interest नहीं निकाल रही because the question is to find the amount only. Okay, now the second part is for 1 year, principal will be same. Since the interest is compounded half yearly, टाइम अभी यहाँ पे 1 year है, राइट? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 6 months था, इसलिए यहाँ पे 1/2 year था. यहाँ पे टाइम दिया है आफ्टर 1 year, दैट मीन्स द टाइम इज 1 year. तो 1 year को भी 2 से मल्टीप्लाई और रेट 12 था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 6%. Okay, now the amount is 1 plus R by 100, तो 2. Okay, so it is 106 upon 100 into 2, फिर यहाँ पे कैंसिल आउट होके द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 67,416. स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे टाइम अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 6 months था और यहाँ पे 1 year था, उसका हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1, लेकिन दोनों को हमने मल्टीप्लाई बाई 2 करना है बिकॉज दोनों के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. Now the sixth question is Asif took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in the amounts that he has to be paying after complete 1/2 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. So just see here,
फर्स्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. ओके, इसके लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा. 80,000 विल बी द प्रिंसिपल. रेट इज दिस. टाइम इज 1 कंप्लीट 1/2. ओके, तो यहाँ से मैं अमाउंट निकाल लूंगी इसका. आप जस्ट सी कैसे किया है. इज सेम, मैं बार बार नहीं बता रही. इट इज 88,000 आ रहा है. ओके, देन आफ्टर दिस वन इज फॉर दैट. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट तो इतना आ गया. 1 साल का तो मैंने निकाल लिया, बट फॉर द नेक्स्ट दिस हाफ ईयर, दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट 12 months, what I'll be doing, I'll be finding out the simple interest. Okay, and for that simple interest, जो मेरा अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट हुआ वो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा. सो इट विल बी 88,000 into 10 into 1 upon 100 into 2, because the time is 1/2. So it is 4,400. So the total amount will be इसका अमाउंट प्लस इसका सिंपल इंटरेस्ट, राइट. सो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा. सो इट विल बी 88,000 प्लस 4,400, दैट इज 92,400. नाउ फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली सब सेम है, बस अब हाफ ईयरली है. दैट मीन्स द टाइम विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड द रेट विल बी दिस हाफ्ड. दैट मीन्स इसका 5 हो जाएगा और इसका 3 years हो जाएगा. नाउ अमाउंट विल बी p into 1 plus r by 100 into n. ओके, सो जस्ट सी क्या मैंने यहाँ पे करा है. जस्ट कैलकुलेशन नाउ. सो दैट टोटल अमाउंट आफ्टर हाफ ईयरली, दैट इज 692,610. Now the difference between the two amounts, that will be after subtracting both of them. Okay, और जो ज़्यादा है that obviously that will be in the this and the lesser will be here. So the total difference between the amounts, that is 210. So that was our question. So that's all for today, students.